Okay, now today we are discuss exercise 1.8, 1.9 and 1.10. So first numerical is exercise 1.8. 2-point charge QA 3 microcoulomb, QB is minus 3 microcoulomb, located at a 20 centimeter apart in vacuum. So plus 3 microcoulomb at A and B minus 3 microcoulomb. Okay, 20 centimeter apart. Okay, first question is, what is the electric field at the midpoint of the line AB joining two electric charges? इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देना है. ओके, सो नाउ डिस्टेंस इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर because total distance is 20 centimeter. Okay, now center point is O. So now electric field, okay, center point C लिखेंगे तो भी चलेगा. So now electric field at center C due to point A is ECA and electric field at point C due to B is ECB. Okay, now electric field due to positive charge is outward and electric field due to negative charge inward, and therefore first is even C and second, okay, first is ECA, second ECB, this point is C. Okay, now electric field ECA is equal to K, electric charge on A मतलब QA, and distance is R square into, okay, this X is x-axis and therefore electric field on x-axis मतलब I caret. So now K is 9 into 10 raised to 9, electric charge 3 microcoulomb upon 0.1 whole square, 0.1 whole square. Okay, I caret. Similarly, electric field at point C due to B is called ECB, and that is equal to K QB upon R square, also on x-axis, so I caret, and therefore 9 into 10 raised to 9. Okay, QB नेगेटिव है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, so 3 into 10 raised to minus 6 upon 0.1 whole square into I caret. So now total electric field at point C, EC is equal to ECA plus ECB, and that is equal to 2 into 9 into 10 raised to 9, 3 into 10 raised to minus 6 upon 0.1 whole square into I caret, So now multiplication is 5.4 into 10 raised to 6 I caret Newton upon Coulomb, I caret Newton upon Coulomb. Okay, आपको इंडिविजुअली डायरेक्शन लिखने तो भी लिख सकते हैं. The electric field at point C due to point A, electric field at point C due to point A is A to C, and electric field at point B due to point, electric field at point C due to point B is C to B. X नहीं लिखा तो इस तरह से भी हो सकता है. Okay, now second question. If the negative test charge of magnitude 1.5 10 raised to minus 9 coulomb is placed at that point, so what is the force on the test charge? Okay, center पे test charge Q0. So now Q0 is equal to 1.5 10 raised to minus 9 coulomb. So now electric force
on Q0 is equal to Q into E at point C. So now 1.5 10 raised to minus 9 coulomb. So now electric field is 5.4 10 raised to 6. So now answer is 8.1 10 raised to minus 3 Newton. Okay, but this direction is Q2 या A to B या QA to QB. Direction of force is A to B. A से B की ओर रहेगा, या इसको I कैरेट भी लिख सकते हैं, in direction of I कैरेट. Now next numerical is exercise 1.9. A system has two charges. QA is equal to 2.5 10 raised to minus 7. QA 2.5 10 raised to minus 7. QB minus 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. Located at point. So A is 0, 0, minus 15 centimeter. And B 0, 0, plus 15 centimeter. What are the total charge and the electric dipole moment of the system? Okay, सबसे पहले क्वेश्चन बताए टोटल चार्ज और सेकंड बताया द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम. सो नाउ टोटल चार्ज Q is equal to QA plus QB. So now 2.5 10 raised to minus 7 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 2.5 10 raised to minus 7 एंड आंसर इज 0 कूलम. ओके, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंफॉर्मेशन दी थी तब लास्ट एक स्टेटमेंट कंप्लीट किया था कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डाइपोल इज 0 बट द फील्ड ऑफ डाइपोल इज नॉट 0. क्लियर? क्योंकि दो चार्जेस जो है वो इक्वल मैग्नेट बट ऑपोजिट साइड, सो एडिशन क्या हो जाएगा 0. क्लियर? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन बताया what is the dipole moment of a given system? Dipole moment. So now vector P is equal to 2A into Q. 2A into Q. So now 2A. Now 2A is equal to R plus position vector of R plus minus position vector of R minus into Q into, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन था नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस मतलब A इज 0, 0, 15. ओके, 0, 0, 15 सेंटीमीटर है, मीटर में लिख रहा है तो माइनस 0.15 देन माइनस 0, 0, 0.15 into electric charge Q. Okay, first हम इसकी subtraction complete करेंगे. So subtraction is 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. ये होगा minus 0.3, minus 0.3. Okay, into electric charge. तो दोनों में से किसी एक की मैग्नीट्यूड रखेंगे. So 2.5 into 10 raised to minus 7. 2.5 to 10 raised to minus 7. So now the multiplication is, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, so answer is 0.75 into 10 raised to minus 7 coulomb meter. 0.75 10 raised to minus 7 coulomb meter. या इसको 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter, but in z axis. बट इन z एक्सिस. क्यों? क्योंकि x 0 है, y 0 है और ये z एक्सिस पे होगा. सो नाउ वेक्टर P इज इक्वल टू 7.5 into 10 raised to minus 8 कूलम मीटर बट ऑन z एक्सिस. या आप इस आंसर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -8
k कैरेट कूलम मीटर। क्लियर? तो ये था एक्सरसाइज 1.9। नाउ एक्सरसाइज 1.10। एक्सरसाइज 1.10 सिंपल है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment P is equal to 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter, 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter, along at 30 degree, theta is equal to 30 degree, with the direction of an uniform electric field, magnet is E is equal to 5 into 10 raised to 4 Newton upon Coulomb, 5 into 10 raised to 4 Newton upon Coulomb. Calculate the magnitude of torque action on the given dipole. Okay, 3 चीज completed है, 3 चीज complete करके दी है. So now torque is equal to P sin theta. So now P is equal to 4 into 10 raised to minus 9. डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट पहले लिखना है, then field 5 into 10 raised to 4 and sin 30, sin 30. So now the multiplication is 20 into 10 raised to minus 5 into 1 by 2. Sin 30 is 1 by 2. So now 10 into 10 raised to minus 5. So answer is 10 raised to minus 4 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क कैलकुलेट करके देना था. ओके, सो नाउ आंसर इज 10 raised to minus 4. और डायरेक्शन, सो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. सो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू P एंड परपेंडिकुलर टू E, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P एंड परपेंडिकुलर टू E. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब फोर्स, सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए. अब जो न्यूमेरिकल बाकी है वो गॉस इक्वेशन, और गॉस इक्वेशन की फॉर्मूला, सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0. मतलब इस इक्वेशन से अभी जो भी न्यूमेरिकल सब कंप्लीट करना शुरू करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलास्ट्रेशन से. सबसे पहले आएगा इलास्ट्रेशन नंबर 1.11. इलास्ट्रेशन नंबर 1.11. पहले डायग्राम उन लोगों ने दिया है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाद में आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर Ex इज इक्वल टू अल्फा x raised to 1 by 2. Ey z is equal to 0. But alpha is equal to 800 Newton upon Coulomb meter raised to 1 by 2. Meter raised to 1 by 2. Okay, सबसे पहले हम लोगों ने Ex लिख के दिया. Ex is equal to alpha x raised to 1 by 2. Ey is equal to z is equal to 0. इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस. Okay, alpha is equal to Newton upon Coulomb meter raised to 1 by 2. Alpha is equal to Newton upon Coulomb meter raised to 1 by 2. Okay, so now first diagram. ये होगा z axis, ये होगा y. Okay, यहाँ वो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे कि वो इन लोगों ने जो बताया वो इस तरह की on x axis. Okay, this distance is a, this distance also a. इसकी सभी साइड की वैल्यूएशन आप a लिख सकते हैं. क्लियर? ओके, फर्स्ट सरफेस ये वाली है, इसको लिखेंगे a1. सेकेंड सरफेस इसको बताएंगे a2. Okay, so now electric field at point A1 is called A1. Electric field at point A2 is called
A2। अब चेक करो कि जो मैं क्रॉस करके बता रहा हूं, ये दो सरफेस ऐसी है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। और सेकंड क्वेश्चन में लिखा द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज कितना होगा क्यूब के अंदर। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब चेक करो, क्यूब के अंदर टोटल 6 सरफेस होती है। डायग्राम में जो ना फर्स्ट और सेकंड सरफेस बताई, बस उसी सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। बाकी चारों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बाकी सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इसलिए 0 होगा कि यहाँ E और A के बीच एंगल है 180, यहाँ E और A पैरेलल टू ईच अदर, ओके। और बाकी सबके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो E इंटू ds, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 लिखना पड़ेगा, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस को लेफ्ट करेंगे, बाकी सबके लिए E इंटू ds मतलब E ds cos 90, और cos 90 होगा मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगी, 0। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट सरफेस के लिए φ1, सेकंड के लिए φ2 कैलकुलेट करना है और दोनों की एडिशन करेंगे। क्लियर। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस 1, सो नाउ फेस 1 φ1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 cos थीटा, A1 cos थीटा, ओके। सो नाउ E1 इज इक्वल टू अल्फा, ओके। x इक्वल टू डिस्टेंस, तो ओरिजिन से फर्स्ट सरफेस की डिस्टेंस इज a, सो a रेस टू 1/2, सो अल्फा x स्क्वायर, तो अल्फा क्या लिखा, a स्क्वायर, ये डिस्टेंस a है, इनटू A1, ओके। A1 मतलब जो सरफेस है उसका एरिया, तो इसके लिए लेंथ a है, स्क्वायर के लिए क्या होता है, a स्क्वायर इंटू cos 180, सो आंसर इज अल्फा, ओके। a रेस टू 1/2 प्लस 2, सो a रेस टू 5/2, और ये आंसर होगा cos 180 मतलब -1। सो नाउ φ1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा a रेस टू 5/2। क्लियर। अगेन अल्फा 1 इज इक्वल टू A1 cos थीटा, E1 फ्रॉम इक्वेशन, सो अल्फा a रेस टू 1/2, ओके। अब होगा एरिया, फर्स्ट के एरिया a इंटू a मतलब a स्क्वायर, E1 और A1 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो cos 180, क्योंकि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर की ओर और इसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर की ओर, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, cos 180 -1, तो आंसर आएगा φ1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा a रेस टू 5/2। फॉर नाउ सेकेंड सरफेस, सो नाउ फॉर फेस 2, सो नाउ φ2 इज इक्वल टू अगेन क्या लिखेंगे, A2 cos थीटा, सो नाउ E2 इज इक्वल टू अल्फा, फर्स्ट क्या रखेंगे अल्फा, सेकेंड सरफेस यहां से a प्लस a जितने डिस्टेंस पे है, इसका मतलब 2a रेस टू 1/2, 2a रेस टू 1/2 इंटू A2 मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर a स्क्वायर cos 0, सो नाउ 2 अल्फा a रेस टू 1/2 इंटू a स्क्वायर एंड cos 0 मतलब 1, सो 2 अल्फा a रेस टू 5/2, ओके। ये आंसर जो मिला ये φ2 है। सो नाउ टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गिवन क्यूब φ1 प्लस φ2, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो सब्ट्रैक्शन होगा, सो लिखेंगे, ओके। एक प्रॉब्लम यहाँ आएगा, ये 2 रेस टू 1/2 मतलब √2, 2 रेस टू 1/2 a रेस टू 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2 अल्फा a रेस टू 5/2 माइनस
alpha a raised to 5 by 2. Now difference is phi is equal to alpha a raised to 5 by 2 common, so root 2 minus 1, alpha 800, a is 0.1 raised to 5 by 2, root 2 minus 1, so now 800, it's called 1.414 minus 1 upon 0.1, so 10 raised to 5 by 2, and therefore 800.414 10 raised to 1 by 2 raised to 5. So now 8 into 0.414 upon the square root of 10 is 3.162 raised to 5, and the last answer is 1.048 Newton meter square by coulomb या volt upon meter. The total flux associated with Q. ओके, और इक्वेशन है, और एक इसमें क्वेश्चन दिया, क्या लिखा? द इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन Q, electric charge in given Q. So now phi is equal to Q upon epsilon 0. According to Gauss equation, phi into epsilon 0, phi is 1.048, 8.85, 10 raised to minus 12, and therefore multiplication is 9.278 into 10 raised to minus 12 coulomb. Clear? And therefore Q is equal to 9.278 पिको कूलम. ऐसा भी लिख सकते, ये सेकेंड आंसर. तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन पूरी थी, और ये जो बताई वो सेकेंड कैलकुलेशन. इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा. Now illustration 1.12. An electric field is a uniform in the positive x direction for positive x, uniform with same magnitude, but for negative direction is negative. E is equal to 200 I caret Newton upon coulomb for x greater than 0, but E is equal to minus 200 I caret Newton upon coulomb for x less than 0. Okay, a red circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at origin placed on x-axis. So now x equal to plus 10 cm and x equal to minus 10 cm. सबसे पहले तो आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स या दोनों सरफेस की फ्लक्स वो पहले कंप्लीट करके देना है. ओके, उन लोगों जो डायग्राम बताया वो कंप्लीट करते हैं. सपोज ये x होगा, इस डायरेक्शन में y, ओरिजिन. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 A1 या इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और क्रॉस सेक्शन एरिया A2. ओके, सबसे पहले तो दोनों के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंप्लीट कर लेंगे. जैसे नाउ हियर A1 is equal to A2 is equal to pi r square. So pi is 3.14 and radius is 5 centimeter. So now 0.05 whole square. So answer is 7.85 into 10 raised to minus 3 meter square. 10 raised to minus 3 meter square. Okay. Now सबसे पहले
electric flux for surface 1 and then surface 2. Electric field for surface 1 मतलब इस surface के लिए और इस surface के लिए. Okay, for phase 1. So now phi 1 is equal to E1 A1 cos 0. Phi 1 is equal to E1 A1 cos 0. So now E1 is equal to 200. A1 7.85 10 raised to minus 3. So now answer is 1.57. 1.57 Newton meter square by coulomb. Okay, cos 0 equal to 1 मतलब वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो फर्स्ट सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी. क्लियर. सो नाउ सिमिलरली फॉर फेज 2. So now phi 2 is equal to E2 A2 cos 0. जीरो इसलिए लिखा, यहाँ भी दोनों पैरेलल है. So now A2 is equal to 200. A2 is equal to 7.85 10 raised to minus 3. So now 1.57 Newton meter square upon coulomb. So now total electric flux. ओके, एक चीज और भी है, उन्होंने एक चीज और बताई कि यहाँ एक सी पॉइंट भी है. यहाँ सपोज यहाँ थर्ड सरफेस हम कंसीडर करें, थर्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन, ये वेक्टर ई और ये वेक्टर ए. सो नाउ परपेंडिकुलर ईच अदर. सो नाउ पॉइंट फॉर पॉइंट सी या फॉर फेस 3 क्या लिखेंगे? phi 3 is equal to E3 A3 cos 90. E3 A3 cos 90. cos 90 0. इसका मतलब यहाँ कुछ भी सरफेस आप कंसीडर भी करेंगे तो थीटा 90. सो cos 90 0 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. सो नाउ टोटल फ्लक्स phi is equal to phi 1 plus 2 plus 3. So 1.57, 2 also 1.57 and 3 0. फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.57, सेकंड की 1.57, थर्ड के लिए क्या मिला? 0. So now total answer is 3.14 Newton meter square upon coulomb. So first question. Okay, now second question. उन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में what is the net outward flux through the each phases, मतलब डिफरेंट फेजेस के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करके देना था. सेकंड में ऐसा बताया what is the flux, what is the flux through the side of cylinder, मतलब यहाँ 3 जो मैंने कंप्लीट करके दिया वो 3 के आंसर 0. ओके, नाउ थर्ड what is the net मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, नेट मतलब टोटल, तो आंसर भी हो गया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, what is the net electric charge inside the cylinder? Okay, so net electric charge, so according to Gauss equation phi is equal to q upon epsilon 0. So now q is equal to phi into epsilon 0 and therefore 3.14 8.85 10 raised to minus 12, 8.85 10 raised to minus 12. So now answer is 2.779 into 10 raised to minus 11 कूलम. लेकिन अब इसको 27.79 10 raised to minus 12 कूलम. सो 27.79 पिको कूलम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर. now illustration number 1.13 is the last illustration. Okay, an early model for an atom considered positively charged point in nucleus of charge ZE. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा,
Z मतलब number of proton. So total charge on nucleus is Ze, surrounded by the uniform density of negative charge up to the radius r. ये रेडियस r और ये जो रेडियस रहेगी इसको लिखेंगे हम स्मॉल r. ओके, इनर साइड पे सब पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन बाकी जो पार्ट रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. The atom as a whole electric charge is a zero, मतलब वो naturally क्या होगा, electrically neutral. For the model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? Okay, what is distance r करके लिखा है. Okay, ये जो distance कैलकुलेट करना है तो r हम दो तीन मेथड से लिख सकते हैं. एक तो सबसे पहले तो इनर साइड एट अ सरफेस और आउटर साइड. ओके, सबसे पहले तो electric charge on nucleus is Ze. Electric charge in nucleus is Ze. But क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, radius of nucleus 10⁻⁻14 meter, so total electric charge in nucleus is Ze. Okay, now the volume charge density for negative charge. Volume charge density for negative charge is called total charge upon total volume. Total charge on total volume. So now minus 3Ze upon 4 pi r cube is a electric charge density for negative charge. Electric charge density for negative charge. Now first, suppose consider Ri is less than r. इसका मतलब इनसाइड हुआ, इनसाइड हमने ऐसी रेडियस ली जो इनसाइड है. क्लियर, Ri is less than. ओके, तो सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रिक चार्ज वो कंप्लीट करना पड़ेगा. सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल charge in Ri sphere. Okay, तो total electric charge in Ri region Q is equal to, सबसे पहले तो सपोज यहां तक हमने Ri लिया, पहले लिखेंगे Ze, लिखेंगे Ze, then plus 4/3 पाई Ri क्यूब इंटू रो. इसका मतलब इस रीजन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. सो नाउ Ze प्लस 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू माइनस 3Ze अपॉन 4 पाई r क्यूब, एंड देयरफॉर Ze minus 4 by 4 pi cancel, 3 cancel, so now Ri cube Ze upon r cube. So now Ze common, so 1 minus Ri cube upon r cube is electric charge, Ri cube upon r cube. So now apply Gauss equation, integration E into ds is equal to summation q upon epsilon 0. Clear? Spherical cell के लिए always E ds cos 0, E ds cos 0, Ze upon epsilon 0, 1 minus Ri cube upon r cube, Ri cube upon r cube. Okay, so now integration E बाहर लेंगे क्योंकि रेडियस सभी साइड इक्वल होगी.
इक्वल मिलेगा. सो नाउ इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू ZE अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस RI क्यूब अपॉन R क्यूब. ओके, सो नाउ area of spherical cell E into 4 pi RI square is equal to ZE upon epsilon 0 1 minus RI square upon R cube. Clear? And therefore E is equal to ZE 4 pi epsilon 0 RI square तो 1 upon RI square माइनस यहाँ RI square रखेंगे तो RI square सॉरी RI क्यूब है. सो RI upon R cube. अगेन ये डिनोमिनेटर में जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा RI मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन RI स्क्वायर माइनस RI अपॉन R क्यूब. ये जो है वो इनर साइड के लिए है, इनर साइड के लिए ना. उसके बाद जो भी बताया सबसे इजी रहेगा कि सेकंड में दिया कि सपोज R0 इज ग्रेटर देन R0 इज ग्रेटर देन R मतलब ये होगा R0 और सपोज R0 के लिए लिखा तो इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रेशन इंटू ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. सो नाउ E इंटू ds cos 0 1 सिग्मा क्यू मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की उससे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कवर होता है. तो इस एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज वो कवर होगा. अब पहले ही बताया कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ होंगे. इसका मतलब सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 फॉर R0 इज ग्रेटर देन R. मतलब इनर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इनर साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. आउटर साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0. और एक कंडीशन दी है और एक कंडीशन बताइए फॉर इक्वल टू R यहाँ लिख देते हैं. सो नाउ R इज इक्वल टू R. क्लियर? मतलब स्मॉल r कैपिटल R इक्वल है. स्मॉल r कैपिटल R इक्वल होगा तो भी इंटीग्रेशन E इंटू ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0. सो नाउ E इंटू ds अगेन थीटा 0 मतलब cos 0. बट समेशन क्या आप समझ मान लो कि ये स्फीयर की जो रेडियस है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में उतने नेगेटिव चार्ज बाकी रिमेनिंग पार्ट में है. इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 एप्सिलॉन 0 एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू 0. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तीनों आंसर लिख रहा हूँ. फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सो ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन RI स्क्वायर माइनस RI अपॉन R क्यूब. ओके, आउटर साइड 0 एंड इक्वल टू R. सरफेस के लिए तो भी क्या लिखेंगे 0. तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड आंसर होगा. और ये था इलास्ट्रेशन नंबर 1.13 और इसके साथ सभी इलास्ट्रेशन कंप्लीट. अब जो पार्ट बाकी है क्लियर वो होगा 1.14 या 15 से स्टार्ट करके एक्सरसाइज में 1.24 तक की न्यूमेरिकल बाकी है. क्लियर?